Hello all. Today I'm going to deal with the topic thermal methods of analysis. This is a part of your analytical methods in which you will identify any compound's properties like its stability to heat, what are the decomposition possible. So whenever you take thermal methods of analysis, there are many like DSC, DTA, TGA, TMA, DIA. There are many, but here I'll be concentrating only on the methods which are have got the questions previously in GATE, CSIR NET और any assistant professor exam. So इसमें सिर्फ 3 methods का prominence है, that is DSC, differential scanning calorimetry, DTA, differential thermal analysis and TGA. अगर आप ये तीनों टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट ठीक से समझ लिया तो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर you to crack any questions related to this. So in this I'm going to explain about different all the 3 methods, DSC, DT or TGA, how they do, what is the underlying process, how it is done, what are the prominent points जिसमें उसका importance ज़्यादा रहता है, and where you may get questions, and some problems about how to identify or how to estimate. These problems you need not get for your any of the competitive exams, but for your MSc level or even for bachelors you may get like they may give you a curve and ask you to identify what is the decomposition of that certain compound. So इसमें in this particular video I will be dealing with TGA and DTA. So in coming videos, like this may be a series of 3 or 4 videos in which I'll be covering DSC, DTA, DTA, TGA, numerical problems which have come in previous question papers and numerical problems related to this concept. So आपको इसमें से ज़्यादा आएंगे, ये क्या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, पर लास्ट 3-4 साल में ये ट्रेंड दिखा है कि देयर आर क्वेश्चंस अबाउट थर्मल एनालिसिस, बट हमेशा आएगा और कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा क्योंकि एनालिटिकल मेथड्स में बहुत से मेथड्स हैं एंड उन्हें सिर्फ प्रायोरिटी लाइक 6 मार्क्स है मैक्सिमम. For analytical techniques you will be having 6 marks, especially for CSIR. So if they give from other areas, then you will not get questions from this. So I'll give in a brief what are this. If you say differential scanning calorimetry, here you will understand all the processes like physical, chemical, क्या process होता under the influence of heat will be explained, पता चल जाएगा. This I'll be taking in the next video. Here I'll only concentrate on TGA and DTA. In case of TGA, if you change the temperature, what is the effect on the mass? At what temperature you get decomposed or this gets get oxidized and all those things. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा decomposition of a compound कैसा होता है? What is the chemical reactions? बाद में कितने temperature तक stability range means what is the thermal stability range? एंड उसका प्रॉपर्टीज किस टेम्परेचर पर क्या होता है, वेर यू गेट व्हाट काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन. सो इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई इस कंपाउंड मे बी लाइक फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट 5H2, इसमें कितने कॉपर के साथ जुड़े हैं, कितने सल्फर के साथ जुड़े हैं, इस पर वी कैन आइडेंटिफाई यूजिंग TGA. DT इज लाइक थर्मल, इज इट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. एट सपोज एग्जांपल एट वन पॉइंट यू गेट अ peak above, facing above. So I'll explain in depth what the curves and all. So this is based on your change in mass with respect to temperature. In that, in one stage you have the temperature kept constant, time change effect of constant temperature on the mass which in time, मतलब कितना समय होने के बाद क्या होगा if you keep the same temperature for a material. So these are like your physical properties predominantly, like TMA is mechanical property, then DMA is like dynamic properties. So dimension changes, deformity, viscosity and transition density. These all are like only more like technical aspects where industry में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और industries PhD work में इस्तेमाल किया जाता है, but this normally is not required for your masters or your CSIR NET और GATE related. बट आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, बट इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट. सिमिलरली DEA, dielectric analysis, normally you don't require this. Prominent are these ones.
If you understand this, इन दोनों को समझ में आ गया, it's more than enough. So in this I'll be explaining about what are the classification thermal analysis. Already मैंने पिछले इसमें दिखाया है, but I'll give in more brief idea. Then what are the instrumentation principles and application of TJ and DTA, and what are the factors affecting thermal analysis. इन थर्मल एनालिसिस के लिए आपको कौन से फैक्टर्स इसे इफेक्ट होता है. इट में भी TJ, DTA, DSC, whichever it may be, सबका कुछ हीट का मतलब इफ यू पुट मोर यू विल गेट डिफरेंस, यू विल गेट लेस. सो जब मैं वो टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा तो डेप्थ में जाऊँगा. सो इन दिस आई स्टार्ट विथ थर्मल एनालिसिस क्लासिफिकेशन. So here thermal analysis can be classified on the on what it gets effect. We classify mass, means TGA is based on your mass reduction, means how what will happen if you increase the temperature or decrease the temperature. On that the changes in mass will give the study is called TGA. If it is heat flow or the temperature, it is DTA or DSC. More or less if you are studying TGA, you will automatically study DTA also, because almost we can formally it was two different, दो इंस्ट्रूमेंट लेने पड़ते हैं. आपके में लेटेस्ट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स दे विल नॉट अबाउट टू, इन वन ओनली यू कैन plot a curve of TGA and DTA. So DSC is like bit advanced version where you can go with physical parameters also, physical chemical parameters. If you try to plot a graph with TGA, if you check a graph of TGA and DSC, you will have much difference. This I'll be showing you in the third video, where I'll be specifically dealing with the graphs of TGA, DSC, DTA and all, and other parameters like dimensions, TMA, DMA. These all are like okay, but this point is not so important for you with the prospect of GATE, NET or CSI and any competitive exam for assistant professor like that. If you are going for a particular like if you are going for studies of polymers, if you are doing research in polymers, these topics you may require, but as of now GATE के लिए, NET के लिए नहीं चाहिए. सिर्फ these three more than sufficient. ठीक से समझ लो, आपको आसानी हो जाएगी क्रैक करने में. So now in this I'll be covering about what are the principal and instrumentation application. Actually instrumentation की आपको ज़रूरत नहीं है, but since I'm covering some factors which will be affecting, so I'll be covering the instrumentation. So TJ refers to thermogravimetric analysis. Thermo refers to heat, gravimetry refers to weight. So means change of weight with respect to heat. This analysis is called TJ. Differential thermal analysis, actually इसे differential thermogravimetric analysis भी बोल सकते हैं, because whatever you get over here, if एक जगह पर decomposition हुआ, you will get a curves. I'll show it later. So in that, if the based on that whether it's exothermic or endothermic, you can identify by this. Actually this is sub part of one more graph which will help us to get more idea of this TJ graphs. So now I'll start about TJ. See, the principle is very simple. If you heat a substance, garam karo ya thanda karo at a constant rate, and you observe the change in weight with respect to temperature or time. I have written time and time because in some cases we keep the temperature constant and time के हिसाब से देखते हैं, but normally it's with temperature. So like यहाँ देखो, if the plot is temperature is varied, then the weight is plotted against that of temperature, which is normally studied. In extreme rare cases, they will go with time. Normal studies, so yeah, like if you change the temperature, what will be whether it will get decomposed or it will be getting oxidized or that kind. In case if your material is like exposed continuously heat को a constant temperature को expose हुआ रहता है, this will be more like if you are going for any industries where you are trying to get a material where it's constantly exposed to heat conditions. Maybe like for this can be used for bricks, silica bricks which are used for your blast furnace. So there you have to give constant temperature like 1300, 1400. So in that cases, visit stable hoga, yeah, it will get default, or after what extent of time your material will get decomposed. This is studied. So this is used for the change of weight will help you to identify about what temperature stability and all those things. So with that, here this is the history. This person
named Kyoto Honda in 1915. This was his brief idea of thermogravmetric analysis, on which he had given the TJ curves of MnSO4.H2O, CaCO3 and CrCO3. Normally, whenever you're studying for the first time, CaCO3 curve is most effective to understand. So this is briefly about what, when and how was this TJ invented. Now, when you take the types of TGA, there are three types classically. That is isothermal or statistical, quasi-static, and dynamic. Isothermal is like keep the temperature constant. There will no change constant, and loss of weight will be factor of time. Whereas in quasi-static means first increase the temperature is increased, then kept constant, then decrease, again kept constant. It's like you will be taking in form of cycle, increasing, keep it constant, decreasing, keep it constant. So they will check about constant change in temperatures, increase, decrease, what is the effect. So lastly, dynamic, that is constant increase. And this case, in all the cases, it will be with delta T, means the difference between the temperature rise will be constant. इसका ये मतलब नहीं है कि लाइक इफ से इंक्रीज मतलब पहली बार 5, दूसरी बार 10, तीसरी बार 20 ऐसे इंक्रीज नहीं कर सकते. ये स्टार्टिंग विथ डिफरेंस ऑफ 5, 10, 15, 20 ऐसा डिफरेंस होना चाहिए. स्टार्टिंग में जितना सिलेक्ट कर रहे हो, लाइक इफ यू आर टेकिंग फॉर 10s ओके, इफ यू आर गोइंग फॉर 20s ओके, बट दैट शुड बी डिसाइडेड कितना कौन सा कंपाउंड है. इनऑर्गेनिक है सो यू कैन गो विथ हायर लाइक 20 एंड ऑल. ऑर्गेनिक है तो स्टार्ट फ्रॉम लाइक 5, 10, क्योंकि द स्टेबिलिटी रेंज इज ऑलमोस्ट लाइक फॉर ऑर्गेनिक वी हैव ऑन लोअर साइड कंपेयर टू इनऑर्गेनिक. बट ऐसा ये भी नहीं बोलूंगा कि लाइक ऑर्गेनिक विल गेट इन विद इन लाइक 600, 700 ऑलमोस्ट कंप्लीट decomposition takes place. But there are some compounds which may go like around 1200, 300 also. But in case of inorganic, you will get a very higher ranges more. So with the next part, like how is the instrumentation? See, this is the general diagram. Here they are saying atmospheric control means your sample is exposed to nitrogen. We don't want oxidation, we want only how it reduces. So atmospheric control means you will be having nitrogen gas inlet. Because nitrogen almost not reacted to any of the compounds and it is highly stable up to 1500 plus unless we ignite the nitrogen, but that is not the scenario. Here the furnace temperature what I mentioned like delta T कितना रहना चाहिए constantly like 10 degree Celsius और 20 degree जैसे हमारे compound के वजह से उस तरह से. This is a recording balance. This about the features of the balance I will be mentioning later. So recorder यहाँ से जितना temperature difference आएगा आपको record करता जाएगा and you will get a curve smoothly like at what कितने temperature what is stability after how it reduces. There are calculations I will be showing. इसके बारे में मैं अगले slide में अगले वीडियो में बताऊंगा. So as of now try it will be based on concept basis. So like I mentioned balance का क्या है मतलब if you have the correct balance your how your now if you go for checking with TJ samples there are instruments like TJ from different companies. They got the same almost same features but your cost increases as your change in वहाँ पर तुम्हारे balance का value रहता है. How accurate is the balance with difference in like temperature difference और कितना accuracy ज़्यादा रहता है proportionally your cost of the instrument also increase. Yeah, there are other features like 2-3 multiple features भी डाल सकते हैं but major priority will be balance. How good, how long extent the temperature it can retain. So features of thermo balance. Here it should be able to change because the quantity what we use is like in milligrams. So slight change also should be recorded very fast. Because like okay, if it is like inorganic like 100, 120, there will be no decomposition. But in case of organic ऐसा बोल भी नहीं सकते. Like you will get a decomposition maybe like less than 100 also. So every changes क्या क्या हो रहा है उसका efficiency रहना चाहिए. उसमें maximum like 1500 तक होना ही चाहिए. Because if you consider for organic तो okay like 600 के अंदर हो जाएगा 600-700 तक. But in case of taking inorganic like 1300-1400 भी जाता है. So the furnace should be able to get with 1500. This is basically of all the and heating rate should be linear and reproducible. मतलब delta T का वैल्यू ऑलमोस्ट लाइक एक बार स्टार्ट किया
पूरे रिएक्शन खत्म, पूरे कंडीशन खत्म होने तक यू हैव टू कीप इट सेम, लाइक मे बी डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री, डिफरेंस ऑफ 15 और 20 डिग्री, एंड रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए. मतलब इफ़ यू डू इट टुडे, अगले और 2-3 दिन के बाद कोई और लेकर तेरे सैंपल लेकर आकर उस इंस्ट्रूमेंट पर टेस्ट किया, सो यू शुड गेट अ सेम कर्व प्रोवाइडेड योर सैंपल इज द सेम सैंपल इज टेकन. पर नॉर्मल सेम सैंपल सेम प्योरिटी करके देखा तो भी उससे सेम कर्व्स आना चाहिए. दैट एक्सप्लेन्स द लीनियर एंड रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ दिस. सो सैंपल जो रहता है वो हीट फर्नेस जोन में रहता है, एंड इट शुड बी लाइक हैविंग यूनिफॉर्म टेम्परेचर. इट शुड मतलब एक साइड ज़्यादा गर्म, एक साइड थोड़ा कम गर्म. द यूनिफॉर्मिटी इन टेम्परेचर मतलब हीटिंग यूनिफॉर्मली होना चाहिए. सो लाइक दे शुड बी लाइक कंट्रोल्ड. थोड़े इसमें क्या करते हैं, दे लाइक टू चेक व्हाट इज ऑक्सीजन. इफ यू गिव सम अमाउंट ऑफ एयर लाइक ऑक्सीजन कंडीशन, हाउ मच इट विल ऑक्सीडाइज. इन केस ऑफ लाइक नॉर्मली दे टेक इन वैक्यूम जैसे, बट वैक्यूम के हिसाब से वी कैन टेक नाइट्रोजन गैस ऑल्सो. एंड what are the other prevention, like balance should be in protected from any carcinogenic gases like sulfur dioxide, sulfur trioxide, ऐसे केमिकल जो जिससे रिएक्ट हो सकता है. we have to make sure it is not having any effect on them, and they should be so much accurate that even minor change like plus or minus 1 degree in case of temperature, and this in milligrams should be understandable. ऐसा नहीं होना चाहिए लाइक +2 हो गया भी तुम्हारा डिफरेंस नोट नहीं हो रहा है, इट्स यूजलेस. हाई बेटर एक्यूरेसी लाइक 0.5 एंड 0.5 डिग्री और 1 डिग्री इज सेट टू बी हाईली एफिशिएंट. इन द वेट मिलीग्राम्स, आई हैव नॉट चेक्ड विद द वेट्स, बट नॉर्मली मिलीग्राम्स के रेंज में आना चाहिए. एंड लाइक व्हाट एंड द फर्नेस शुड बी लाइक इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर एंड इफ आई वांट टू कूल इट फास्ट कूलिंग होना चाहिए. नॉर्मल हीटिंग मतलब आसानी से जल्दी कूल नहीं होता, बट दिस सिस्टम इज डेवलप इन सच ए वे दैट जितना जल्दी हीट होना चाहिए उतना जल्दी हीट होगा, उतना जल्दी कूल होना चाहिए उतना जल्दी कूल हो जाएगा. क्योंकि इट्स नॉट लाइक अब किया लाइक 1 सैंपल हुआ 2-3 घंटे तो वी कांट कीप द सिस्टम फॉर दिस. ओके 10-15 मिनट्स फॉर क्लीनिंग, ओके हाफ एन आवर टू 1 आवर फॉर क्लीनिंग. आफ्टर दैट आई हैव टू रीस्टार्ट अ कंपाउंड विथ नॉर्मल फर्नेस टेम्परेचर, दैट इज रूम टेम्परेचर. इफ नहीं हो रहा है मतलब the system is not so good. If it becomes, it is a good system. So like factors that is affecting, already I mentioned heating rates, already I told like it should be constant. Furnace condition like static, dynamic and inert. Normally inert में किया जाता है, dynamic और static का requirement है. Sample containers like it's like plastic में हो सकता है, platinum, it depends. So characterization of sample, weight, sample का weight कितना है, it should be like within like 10 to 15 milligrams. Particle size, जितना particle size बड़ा होगा your compound will take more time, and उसमें आपको temperature में difference बहुत दिखेगी. Heat of reaction means it also depends about whether it is reacting with any of the gases you condition with. Sample ज़्यादा प्रेस हुआ है क्या, और जितना प्रेस हुआ उतना देरी लगेगा. If it is very loose also जल्दी हो जाएगा, पर यू विल नॉट गेट एग्जैक्ट रीडिंग्स. एंड सोर्स मतलब प्योरिटी कितना है. सो मैं बोल रहा था ना थर्मोग्राम, हियर से इफ यू आर हियर दे हैव टेकन कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. हियर फ्रॉम 100 to 2 to 6 they have loss of water. From 346 to 420 they have lost one more carbon monoxide. From here it is lost from 660 to 840 you lost carbon dioxide. So here यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन नहीं दिखा है. दिस इज लाइक टिपिकल ग्राफ हाउ यू आर गोइंग टू गेट फॉर TGA. इन दिस आपको ये सभी का डिटेल आई विल बी डीलिंग विद इन द कमिंग वीडियोस. सो एप्लीकेशंस नॉर्मली प्योरिटी, थर्मल स्टेबिलिटी जो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ड्राइंग टेम्परेचर्स एंड स्टेबिलिटी, कंपोजिशन क्या है, इग्निशन टेम्परेचर, एंड डायरेक्ट एप्लीकेशंस लाइक कैसे स्टेबिलिटी के सब भी आ जाता है. सो मोर और लेस एनी थर्मल एनालिसिस दिस इज योर एप्लीकेशन. सेपरेट इसका एप्लीकेशन दूसरा, उसका एप्लीकेशन दूसरा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा. सो नाउ आई विल डील विद TGA. सिंपल, हियर इट्स लाइक स्लाइटली डिफरेंट, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. यहाँ पर दो इन प्रीवियस इफ TGA सिर्फ एक कंपाउंड लिया जाता है, हियर यू हैव टू. वन इज द सैंपल
and one is a reference material which is non-reactive. So they will check what's the difference in temperature and you will get a curve based on that. Here you cannot identify whether it's going thermal chemical reaction हो रहा है कि physical हो रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा. Only whether it's heat release हो रहा है या heat absorb हो रहा है, उस पर भी हम बोल सकते हैं. So like this is a curve. यार ओके लाइक इन्होंने दिया है कि फिजिकल है तो एंडोथर्मिक होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज देयर आर सम केमिकल चेंजेस विच ऑल्सो गो एंडोथर्मिक एंड सम फिजिकल चेंजेस विच आर ऑल्सो एक्सोथर्मिक. सो हियर ओके दिस इज जनरलाइज्ड फॉर्म. इन इफ यू वांट देयर आर मोर पैरामीटर्स इन दिस, I can cover up in if you all want I can cover up in the coming videos. So if you have the difference is negative, मतलब आपका सिग्नल नीचे आ रहा मतलब एंडोथर्मिक मीन्स हीट इज एब्जॉर्ब. बट इफ द डिफरेंस इज अबव देन इट इज एक्सोथर्मिक. इसमें और एक कंडीशन आ जाता है कि इट इज अबव द जीरो, स्लाइटली अबव, दैट विल बी डेल्टा CP, मतलब हीट कैपेसिटी में आ जाएगा. बट दिस इज इन रेयर केस, दिस टू आर कॉमनली ऑब्जर्व. If you combine, if normally as per new working systems, TJ और DTA कर्व्स एक ही में आ जाते हैं, so it will be convenient स्टडी करने के लिए. So like already as mentioned, thermo है तो it will be less than reference, exo will be upwards. So based on the size we can tell the, we can get larger information like if it is sharp then what is it possible, what if it is if it is broad blunt then what is this. यहाँ पर दिया है कि फिजिकल चेंजेस विल गो फॉर एंडो. इट्स नॉट लाइक दैट, जिस कंडीशन में दे रहे उस पर आपका एंडो या एक्सो पता चलेगा. एंड नॉर्मली यहाँ पर हम कुछ भी ज़्यादा बोल नहीं सकते. इफ यू कंसिडर DSC कर्व्स विद DTA इट विल बी इजी लाइक ओके फिजिकल है या, बिकॉज दे विल गिव डिफरेंट टेम्परेचर्स. एंड नॉर्मली इन स्टडी के लिए वी विल कंसिडर TJ, DSC एंड DTA. इन दैट यू विल कम टू नो लाइक ओके जो TJ में दिखा है इट विल, with that you will have some additional concept DSC, मतलब physical changes can be observed in DSC, but in case of DTA you will, TGA will not get. And DTA like exo है endo है, इतना समझ में आएगा, nothing more than that. So single if you take DTA curve it's useless, you will only come to know exo है process or endothermic. But if you are taking TGA with DTA or DSC with DTA then it's more effective. So like this is the instrumentation, not much is required. Like I mentioned, there are two. Then here furnace, same temperature difference is noted. Sample temperature, what are the difference? It's like thermocouple. Since the instrumentation के पर आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं, so better you concentrate more on what are the problems and all those things. I given brief concept of दोनों का TJ और DTA. Like बोला था ना, application more like transitions, heat absorber and specific heat. You can calculate the problems I'll be solving in coming video. So among the next coming videos in this series is like DSC, that is differential scaling calorimetry, problems from TGA and related topics, and you will be having previous year's question from CSIR, NET, GATE and other assistant professor exams. Not only assistant professor और किसी भी government based exam जिसमें TGA, DTA or anything like that is being asked, I'll cover. So like if you have any more suggestions you can provide, comment it in my comment box or you can send it on my mail. जिसका जैसे आपको convenient हो जाए वैसे कर सकते हो. Like if you give more suggestions we can get with new topics. Okay, with this I like to end. Please do like, subscribe and share my videos to your friends.